our constitution. Let's read a lesson, competencies. Understanding the meaning and importance of the constitution. Understanding the preamble of the constitution. Understanding the silent features of the constitution and appreciate them. And understanding the profile of persons who were involved in drafting of the constitution. Understanding the concept of the republic. Understanding the concept of the republic. Understanding the need for strengthening ourselves in adopting the principle of secularism in our daily life. Developing the attitude to respect the constitution. हेलो हाँ मैडम सर आवाज बहुत आ रहा है ना अब नहीं आता देखो अब नहीं आता ठीक फिर से स्टार्ट करोगे सर हाँ स्टार्ट कीजिए फिर से ओके बहुत आवाज आ रहा है गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे let us begin civics lesson our constitution. So see page number 93, civics lesson our constitution. Let's read a lesson competencies. See here, understanding the meaning and importance of the constitution, understanding the preamble of the constitution, and the silent features of the constitution and appreciate them. The profile of persons who were involved in drafting of the constitution, and the concept of the republic, and the need for strengthening ourselves in adopting the principle of secularism in our daily life. And last one, developing the attitude to respect the constitution. So let us see meaning and importance of the constitution. Students, as you know, every year we are celebrated many national festivals in our school. Okay, one such a festival is a Republic Day. Every year we are celebrated Republic Day on January 26th. As citizens of our nation, it is our duty to understand why we celebrate it. It is a day to remember when Indian Constitution came into force on January 26, 1950. Our country became an independent republic. So, देखिए हमको मालूम होना चाहिए हम हर साल है ना बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल्स को मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हम एक रिपब्लिक डे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हर साल जनवरी 26 को तो हम इंडियन सिटीजन्स होने के नाते भारतीय नागरिक होने पर हमको मालूम होना चाहिए हमको ये जानना जरूरी है कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं सभी को ये मालूम होना चाहिए जो हम जनवरी 26 को मनाते हैं तो ये क्या है आज हम ये क्लास में our constitution में हम ये डिस्कस करेंगे तो let's start our constitution. So now a question rise our mind that is what is constitution? Constitution क्या है? संविधान क्या है? Constitution means a set of basic rules followed by a country. There is a reference to the rights and duties of the citizens and the constitution is a reference guide to the government. संविधान क्या है? Constitution क्या है?
ये क्या है, एक बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि पूरी कंट्री को फॉलो करना चाहिए. A constitution is a body of laws which lay and down the basic structure of the government. So see here meaning and importance of the constitution. Constitution means a set of basic rules followed by a country. It enumerates the organs. Organs means three organs hai: executive, legislature and judiciary. Organs of the government, its powers. Powers means fundamental rights and functions. There is a reference to the rights and duties of the citizens. The constitution is a reference guide to the government. No one should violate the constitution. हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ लॉज एंड विच लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक लिख दी गई है. उस बुक में बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं. वो रूल्स सबके लिए हैं. वो रूल्स इंडियन सिटीजन्स के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनके लिए भी है. उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी वर्क कैसे होगा, कैसे ये काम करेगा, इसकी क्या लिमिट्स है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी गई हैं. इसलिए इसलिए मेंशन कर दी गई है कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करे. इसकी खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं कर सकता. हाँ, नो वन शुड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके खिलाफ कोई भी जा नहीं सकता. सो इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is permanent as it is the fundamental law of the country. Everyone has to adhere to it. All people, including the president, the prime minister, parliamentarians, judges, and officers, are bound by it. So everyone, listen here, students. Everyone followed to it. All the people, common people, आम आदमी जो भी बोलते हैं, तो कॉमन पीपल से लेकर तो प्रेसिडेंट तक, प्राइम मिनिस्टर, जज, एनी ऑफिसर्स, कोई भी, हर कॉमन आदमी भी इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना जरूरी है. इसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता और इसको कोई भी मानना नहीं बोलकर ऐसा नहीं हो सकता. सभी कॉमन लोग हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या पार्लियामेंट्री के जजेस हो या कोई भी ऑफिसर्स हो, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ेगा. सो नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट the rights of the citizens as all are equal before the law. So most important of our constitution is all are equal. Common people, prime minister, everyone, every citizen, as all are equal. सभी लोग, जो गरीब है, अमीर है, जो कैसे भी हो, सब है ना, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, कानून की नजर में सभी लोग एक साथ है. ऑल आर equal. It functions as a reference guide to the duties to be performed by the government. Means what has the duties of the government and people, all are equal related issues. Next, it coordinates. Coordinates means it coordinates the functions of the democratic institutions such as legislature, executive and judiciary. ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या है? Can maintain very good relationship. So this it also organizes better relations between the government and the individuals. Very good relationship. So this is the important of our constitution. ये हमारे constitution में बहुत ही important point है. Next, drafting committee. Who is Dr. B.R. Ambedkar? You know, why do we look at
him today with great respect. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है और हम आज उनको क्यों इतना रेस्पेक्ट देते हैं, ये आपको मालूम? सी है। Drafting Committee of the Constitution. See here, the Constituent Assembly prepared the Constitution. Dr. Rajendra Prasad was elected as its president when the Assembly met for the first time. Yes, Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Drafting Committee. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. नेक्स्ट, the Constituent Assembly prepared the Constitution. Dr. Rajendra Prasad was elected as its president when the Assembly met for the first time. Here, Dr. Rajendra Prasad is elected as its president. Constituent Assembly with Indian members was formed 1946. The Assembly had 299 members. The first session was held on 9th December 1946 and the second session was held on 11th December 1946. Okay, the Constituent Assembly formed total 22 committees and 5 subcommittees to examine in details. So it is related the issues of the countries and also created a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar and also called the architect of the Indian Constitution. The Constitution Assembly prepared the Constitution. Okay. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट हुए. नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमिटी. In order to hasten the process of preparing the constitution, the assembly created various committees. It also created a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Yes, all the members are discussed in details in the meeting of the Constitution Assembly. Understood? Hence, it took the members of the Constituent Assembly verified the draft constitution and proposed 2,473 amendments. The proposed amendments and the draft constitution were discussed in details in the meeting of Constituent Assembly. Hence, it took 3 years for the constitution to have a final shape. Yes, students, all the members are discussed in details in the meeting of the Constituent Assembly. Hence, it took 3 years. The constitution had to final shape. Children, our constitution was approved on November 1949 and coming to force and adopted on January 26, 1950. Okay. Dr. B.R. Ambedkar was the law minister of India from 15th August 1947 to 26 January 1950. Next. The Constitution was adopted on January 26, 1950. The Constitution declared India as a republic. In order to mark the adoption of Constitution every year, January 26 is marked as a Republic Day and it is a national festival. Yes, the state celebrated as a Republic Day every year. We are celebrating January 26 as Republic Day. Okay.
On November 26th every year, the Constitutional Day is celebrated as it was on November 26th, 1949. The Constitution was approved by the Constituent Assembly. Okay. According to the directive of the Constitution, the first general election of India were held between 1951 to 52. The parliament with bicameral. Bicameral means chambers, two chambers, legislator. For example, Lok Sabha and Rajya Sabha came into force in 1952. So, preamble to the Constitution. Serious students, preamble. The Constitution of India begins with a preamble. Means this is the most important topic, preamble to the Constitution. The Indian Constitution combined in itself the best features of different constitution of the world and its own preamble. Okay. The Constitution of India begins with a preamble. The preamble is considered as the heart of the Constitution as it represents the dream and ideologies of the people. So, imagine students, the preamble is heart of our Constitution. The Constitution of India began with the preamble, है ना? ये जो preamble है ना, ये first जो first पेज रहता है बुक में, ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट, दिल है। इसको क्या बताया गया है? प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। Justice, freedom, equality, self-respect, fraternity, and national integrity are the ideologies that find reference in the preamble. In the nature of India, sovereignty, democratic republic, nature, social, economic, political justice for all the people is upheld, and it has been described as a general constitution, है ना? तो क्या बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल बताया गया है। See here the preamble of our constitution. Here, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens. Okay, justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, and equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to here we adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So here our Indian Constitution, silent features of the Constitution. Yes, our Constitution has its own unique features. Here our Indian Constitution is a written form. It is the lengthiest constitution of the world. हमारे world में जो है ना सब ये हमारा Constitution है ना writing form में है, इसे लिखा गया है, तो ये writing form में है और ये world का सबसे lengthiest लिखा हुआ Constitution है world का. So here the Indian Constitution is in the written form. This is the lengthiest constitution in the world. The structure, power, and extent of power of three organs of the government, such as legislature, executive, and judiciary, are explained. Already आपको मालूम है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्योंकि the structure, power, and extent of power of three organs
लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में। देर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फॉर अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए ही काम करता है। देयरफॉर द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बिग, इसी वजह से पूरे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल जो भी इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस, इसके पावर्स और इसके जो ऑर्गन्स इसके अंदर एंटर है, इसी वजह से ये लेंदियस्ट है, इसीलिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना बिग है। ओके, नेक्स्ट republic. Republic means the head of the country is indirectly elected by the citizen. The constitution has declared India as a republic. In the case of republican system, there is no rule of the king. यहाँ पर king नहीं होता है। रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि ये पब्लिक वोट देकर इलेक्ट डायरेक्टली पब्लिक ही इनको इलेक्ट करती है, मिनिस्टर्स को, ऑफिसर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, किसी को भी। तो ये क्या है, यहाँ पर देर इज नो रूल ऑफ द किंग, इंस्टीड देर इज द रूल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, है ना। इंडिया विच हैज दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पर है ना जनता ही वोट दे, जनता ही मिनिस्टर को, ऑफिस जो भी चुनना है हम इनको जनता ही चुनती है, इसीलिए यहाँ पर किंग्स का रोल नहीं है। नेक्स्ट, इसीलिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से जानते हैं। सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. Ambedkar, the president of the Constituent Assembly, who Dr. Rajendra Prasad, and Dr. B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, and Pandit Jawaharlal Nehru, first prime minister of India. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज मीन्स हमारे हक और हमारे कर्तव्य क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन एट प्रेजेंट, है ना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना फंडामेंटल्स राइट्स और ड्यूटीज जो इसमें है मेंशन है, वो क्या है, हर भारतीय नागरिक के लिए है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 6 है। द स्टेट कैन नेवर पास एनी लॉ दैट curbs these fundamental rights. In case of violation of fundamental rights, the judiciary has the power of rectify it. The citizens cannot exercise their right as per their whims and fancies. The 11 fundamental duties are there in the constitution. जो हमारे हक है, जो हमारे कर्तव्य है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना मेंशन है। कोई भी हमारे हक को छीन नहीं सकता और कोई भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इंसाफ करने के लिए लॉ है, जुडिशरी है, न्यायालय है, और ये सब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं हमारे 11 हैं, और हमारे राइट्स कितने हैं 6 हैं। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, इसका ये क्या है मालूम, सेकुलरिज्म है। The Constitution upholds the principle of secularism. The governments are expected to make no discrimination on the basis of religion. Sorry. The Constitution upholds the principle of secularism. The governments are expected to make no discrimination on the basis of religion and are expected to treat all religions equally. संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, इसमें सभी धर्म के मानने वाले, सभी मजहब के मानने वाले ऑल आर इक्वल है, सभी के लिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर सभी लोग इक्वल है। द गवर्नमेंट कंसीडर्स नो रिलीजन एज इट्स रिलीजन. एवरी सिटीजन इज एट फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ हिज चॉइस एंड फेथ. कोई भी
सिटीजन भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से अपने धर्म पर चल सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई भी इसके धर्म में इंटरफेयर नहीं हो सकते। और इनका उनके every citizen is at freedom to practice religion of his choice and faith. The government has the authority to control the freedom to practice one's religion in the interest of the public. जिसको अपने धर्म पर चलना है वो चल सकते हैं, को सबको अपने अपने धर्म पर अपने अपने धर्म को फॉलो करने का हक है। Next, independent judiciary. The judiciary is independent of executive and legislative and has adequate powers. Neither the government nor the parliament can interfere with the functioning of the judiciary. All are equal before the court of law and all have right to justice is the principle of the judiciary. The decision of the Supreme Court is final and all are expected to adhere to it. ये कानून भी है ना सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कॉमन पीपल हो, आम आदमी, सभी के लिए कानून एक है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या है, उनका डिसीजन फाइनल होता है। वो जब सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसीजन दे देता है तो उसको सभी लोग मानना ही चाहिए, उसका उसके जो जजमेंट होता है वो कंप्लीटली हमको फॉलो करना ही चाहिए। Universal adult franchise. The system of electing representative through voting of adult members 18 years and above is called universal adult franchise. हमको वोट देने का भी हक है। अब वोट देने के लिए एक एज लिमिट है हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका 18 इयर्स, जब आप 18 इयर्स के होते हैं तब से हमको वोट देने का हक हासिल है, उसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज बोलेंगे। ऑल सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर वोटिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर भारतीय नागरिक को वोट देने का हक है जब वो एलिजिबल हो जाता है, तब वो 18 इयर्स का होता है तब वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। देन अ गुड गवर्नमेंट कम्स टू पावर। उसको हक है कि वो अपना वोट अच्छे पावर्स को दें और अपना पावर जो है ना अच्छी गवर्नमेंट चूज करके उसको ये करें। The Constitution wishes to establish the welfare state. हम संविधान में क्या है, अगर हम अपने हक को अच्छे से यूज करें और हमारे स्टेट को अच्छे से खुशहाल बना सकते हैं, अच्छा वोट देकर और अच्छी गवर्नमेंट को चुनकर। इलेक्शन सिस्टम, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। इन द पास्ट 6 डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स 1 डिकेड इज 10 इयर्स, तो 60 साल पहले से पीरियडिक इलेक्शन हैव बीन कंडक्टेड। ये इलेक्शन सिस्टम है ना 6 डिकेड्स बिफोर से ही चला रहा है। द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन adequately deep rooted in our country. It is still a satisfactory system in spite of certain demerits. अब आप देखते हैं आपको इलेक्शन वोट देने के लिए इलेक्शन कार्ड मिलता है, वो उसकी वजह से आप वोट दे सकते हैं। आप 18 इयर्स के हो जाने के बाद, एलिजिबल होने के बाद आप वोट दे सकते हैं। तो ये सिस्टम क्या है, डीप रूटेड है हमारे कंट्री में। उसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज रहते हैं, बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं, वो फिलअप करना है। वो सब करने के बाद ही हम वोट देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो थैंक यू।